Hi guys, so continuing our DSA course, and yeah, these are some of the problems. And I not mention the topic at first, but you will guess it. Yeah, as we do problems. So first of all, this problem given a string S of lowercase alphabets and a number K. Your task is to print the minimum value of the string after removal of K characters. Exactly K. Yeah, if they have not mentioned as such anything, so yeah, like exactly K you can take out, and the value of string is defined as the sum of squares of the count of each distinct character. This might be yeah, but it's not that like you have to do sum of what, sum of squares, square of what, square of a count of each distinct character, like how many frequency of a character, and then yeah, so you have to minimize the squares. So the way to minimize the sum of squares is to have as low number as possible. It does not matter as such key you have three numbers or four numbers. So what I'm trying to suggest is that it not matter that you have four distinct character or five distinct character, but if you will have five distinct character, the frequency of overall I think will decrease, right? So that you should go with that approach instead of going with the approach where you have only four distinct character and one distinct character has high frequency, because then square will go big. Yeah. Now, so how to do again? Multiple approaches. Some would say direct simulation. Why not you create a given frequency array 123, which it is 113 A, B, and triple C. Now all you need is that array and do some manipulation, do some, yeah, like analyze this and return 6. How? K is equal to 1, right? So you can remove, in this case it's very simple, you will remove this. But let's say if you have that, so the algorithm is really straightforward, that K is equal to, let's say, 4 character you have to remove. So first you will go with someone having maximum frequency, you will try to decrease it. Okay, but how, up to how much? Like will I do all the four removals from the 6 and make it 2? No, actually what we will do, we will drop the 6 to 5 and to 4. Now 5 becomes maximum, so my point of operation changes. I have to do operation on maximum frequency. So now 6 is not a maximum frequency anymore, it's become like 4. Now 5, I need to do work on 4. So instead of going making this 4 3, you should make this 5 to 4. That's what I meant when I saw like how you have to minimize the sum of squares. After this, you see all four, so decrease any four. So make it 3, then make it 3, then make it 3. So as like these how your operation go like. So this is the algorithm. How you implement it, yeah, matters on you. Depends on you what approach you take it, and marked as easy. So there is no restriction for time complexity, like there is no strict restrictions. So what you can do, sorry, instead of q you can like how you can get the maximum of all these elements, right? There's an approach called priority queue, or set also would work, but yeah, priority queue. uh, it is basically specifically designed to give you maximum of a particular range or minimum of a particular set of numbers, right? So that what you will do, key, first of all, I have these as a set of number, and then I'll take out the top, which is a maximum, I'll decrement the maximum, okay, and then yeah man, like that's how you have to go. And my maximum changes. Now my max is max minus 1. There is possibility it can be still my max, or some other person becomes my max. Like in case of 6, you drop it to 5, then 5 is still fine. You drop it to 4, then there is another maximum 5 there was, right? Chalo, so this is the next problem. And so how you determine the topic was priority queue, which is somehow related to, you can say, like heap, or also yeah, heap. Yeah, let's put it straight. So first non-reading character in the stream, given a string, and first non-reading repeating character that you need to find out. For each character, the worst case you can do, you can travel like all like characters cell 0 to I,
see like which has frequency like 1 and मतलब means it repeats just not it's non-repeating, and it is like yeah as left as possible. It has index as lower index as possible. So that's how you return in log n time. But what can be done better is um are you sure like is it better? But yeah, what you do, you push in, you maintain a queue of characters which have frequency 1. So what do you do? First you see, analyze the element, see its frequency. If it is 1, you push into queue, while queue dot size and front of queue like is not having the frequency 1. So you pop it because queue is arranged in a way like left to right. So I would want my leftmost character that has frequency 1. So but this is has not a queue of front is the leftmost character, but if there does not have a frequency 1, you pop it from the queue. Hmm. And then yeah, whatever is at the front, you take it down, and if no one is at like queue size is 0, so you do this, and that's how we go. अच्छा, because यहाँ पे there might be the possibility कि ये front क्यू में पहले भी आ रखा है and इसकी frequency बढ़ गई, frequency let's become 2 3, and we are not checking कि if frequency becomes yeah 2 3 I pop it. No, because there is no way to pop it from a queue like any middle element from the queue. You can only pop front. So that's how we uh, do, and front पे ही हम work करेंगे. Okay, there might be the possibility कि अभी front की frequency 1 है और front के आगे कुछ elements हैं जिनकी frequency बढ़ गई है, but that's not our yeah like matter of consideration. As far as like front की frequency 1 है and I know front is my leftmost element, so yeah, go with front. बट अगर वो नहीं है, लेट्स से अगर ये फ्रंट ही एलिमेंट होता और फ्रंट की फ्रीक्वेंसी इसने बढ़ा दी, आई एम नॉट चेकिंग कि यहाँ पे की फ्रंट की फ्रीक्वेंसी 1 है या फिर क्या है, आई एम जस्ट चेकिंग इफ दिस की फ्रीक्वेंसी 1 है तो पुश इट. बट पॉपिंग कहाँ होगी? पॉपिंग यहाँ होगी कि इसने फ्रंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, सो इसको पॉप कर दो तुरंत. ओके, अच्छा. सम मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट सब एरे साइज के, व्हाट डज इट मीन? सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट ऑफ अ सब एरे ऑफ साइज के. अच्छा, so you have to process each subarray of size k. They will have some maximum, some minimum, and yeah, that's how you go. So worst case would be go each subarray of size k n into k time complexity, and उसमें भी maximum minimum kind of के लिए तुम्हें like if you do in a smart way, you will not need an extra time complexity. So that is n into k तो दिख रहा है, but can you do better? Yes. Sliding window, and you somehow priority queue something like that. Positive negative integer task is to find. So सबसे पहले key equal to 4, I'll push 4 elements. So this is the first thing, first window. I got my maximum, I got my minimum. अभी that will depend what will उसकी आईडी भी स्टोर करेगा. मैक्सिमम की आईडी क्या है, मिनिमम की आईडी क्या है. मिनिमम की आईडी है, मैक्सिमम की आईडी ये है. तो या कि अभी तो इसको पॉप करने की जरूरत नहीं है प्रायोरिटी क्यू से. ठीक है, लेट इट बी इन प्रायोरिटी क्यू. और माय विंडो चेंजेस, तो एक ही नया एलिमेंट आया है, इसको पुश कर दो. अब मिनिमम अपडेट हो गया तो मिनिमम अपडेट कर दो. ठीक है, स्टिल. और हाँ, मिनिमम अपडेट हो गया तो ठीक है. अब फिर -1 को देखने की जरूरत ही नहीं है, और ना ही उसको पॉप करने की जरूरत है. ठीक है, बट द प्रॉब्लम वुड अकर कि जब मैं -3 को पॉप कर दूंगा तो फिर या -3 जब पॉप होगा तो -1 भी. सो -1 के पॉप होने की एक सर्टेन लिमिट है कि k इक्वल टू 4, तो -1 यहाँ पे जाके पॉप हो जाना चाहिए. और वो कैसे होगा वो हमें देखना पड़ेगा. uh, hmm, hmm. सेट में से इरेज कर सकते हैं as soon as you do that. मल्टी सेट बना के सेट में से एक फ्रीक्वेंसी इरेज कर सकते हैं, और मैक्सिमम और मिनिमम भी आई थिंक मुझको सेट देता रहेगा. बट आई एम थिंकिंग कि अगर मैं इसको सेट में स्टोर कर लूँ एंड देन इसके बाद इसको सेट में स्टोर करूँ. ठीक है, और अभी स्टार्टिंग -4 तो कुछ नहीं है. ठीक है, स्टार्टिंग -4 अभी भी कुछ नहीं है. स्टार्टिंग -4 अभी कुछ होगा. ठीक है, तो अब मेरे को 2 रिमूव करना पड़ेगा इस विंडो में से. लाइक विच विंडो में से? इस विंडो में से मेरे को 2 रिमूव करना पड़ेगा. अच्छा,
ठीक है, स्टार्टिंग -1 को रिमूव कर दो एज सुन एज यू गो इन दिस विंडो। इसको सेट में इंसर्ट करो -3 को, और जो भी तुम्हारा आई था उसको रिमूव कर दो अपने सेट में से। ठीक है, सो एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव अ पर्टिकुलर सेट, और उससे मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकाल सकते हो, आर बिगिन, सॉरी बिगिन और एंड। ठीक है, ठीक है ना, इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, पर अगर सेट ही अप्रोच है तो ठीक है। डेक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट फिर सेट में टाइम कितना लगेगा? एन लॉग के। हम्म। ओ एन जितना फास्टर तो नहीं है, बट काम हो जा रहा है। मैक्सिमम। ठीक है, एन लॉग एन अप्रोच, सॉरी एन लॉग के अप्रोच, बट ओ एन अप्रोच देख लेते हैं एक बार। डी क्यू काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन रेयर, बट या इट्स नाइस टू नो। और डीक्यू में जनरली हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है कि फ्रंट और बैक, तो मिनिमम को बैक में डालो, मैक्सिमम को फ्रंट में डालो, कुछ कर सकते हैं ऐसा। दो डीक्यू बना रहे हैं, एस और जी दैट स्टोर इंडेक्स ऑफ करंट।
Absolutely. In G, we maintain decreasing order of values, increasing order of values. मेन चीज इसमें यही रहती है कि हाउ यू आर एम्प्टी कैसे कर रहे हो अपना स्पेस जो तुमने यूज कर रहे हो उसको खाली कैसे करा रहे हो, क्योंकि खाली कराना इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो भी तुम्हारा स्टोरेज है उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं दैट आर योर पोटेंशियल आंसर्स। सो उसमें वो एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जिसकी अब वैलिडिटी नहीं है, लाइक जो के एलिमेंट्स पहले आया था। ये कुछ ऐसा करेंगे कि जिसकी अब नीड ही नहीं है, चाहे वो वैलिड है पर उसकी नीड नहीं आगे, उसको रिमूव कर दो। ठीक है, बट हाउ विल यू चेक वैलिडिटी? हाँ, ये मेंटेन करेंगे कि किस टाइम पे आया था। प्रायोरिटी क्यू में हम ऐसे करते हैं कि वैल्यू कॉमा उसका किस टाइम पे आया था, ठीक है। तो या तो जब हम जाते हैं तो उसमें से हम मैक्स उठाते हैं पहली बात, अगर उसकी वैल्यू सही है। जब तक वो वैलिड नहीं हो जाता तब तक हम उसको उठाते रहे, हटाते रहे। अब यहाँ पे मैं सेट की जगह प्रायोरिटी क्यू भी यूज कर सकता था और सेम इम्प्लीमेंटेशन कुछ रहती उसकी। प्रायोरिटी क्यू में हम डायरेक्टली इरेज नहीं बोल सकते थे, प्रायोरिटी क्यू में हम क्या बोलते कि हम सीधा उठा लेते वो वैल्यू, फिर हम चेक करते हैं उठाते हुए कि भाई ये मैं मैक्सिमम उठा रहा हूँ, क्या ये वैलिड भी है नहीं है, अगर वैलिड नहीं है तो पॉप करो इसको भी। और या जब तक वैलिड नहीं आ जाता तब तक पॉप करते रहो, और जैसी वैलिड आया मतलब तो मतलब ये मैक्सिमम भी है वैलिड भी है तो ये मेरा आंसर है। उस तरीके से होती है वहाँ पे चीज़ें। एंड ऑल लेवल्स ऑफ टू ट्रीज आर एन सो नॉट ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, राइट। दोनों को सॉर्ट कर सकते हैं, ऑर्डर निकाल के एक वेक्टर में सॉर्ट कर देंगे काइंड ऑफ। सॉर्ट नहीं करना तो क्या फ्रीक्वेंसी मैप बनाओगे?
ताकि सॉर्ट ना करना पड़े, हैश मैप में ही काम हो जाएगा। हाँ। गेम विद स्ट्रिंग्स, इसको डॉक्स पे ले चलते हैं। मेन मोटिव इज टू सॉल्व ऑन डॉक्स। अरे ये तो अभी करके आए थे हम, गेम विद स्ट्रिंग से शुरू करा। और क्या, मैक्सिमम फॉल्स अब एरेज ऑफ साइज के ग्राम्स और नॉट। ठीक है यार, फिर इसको खत्म कर दें यहीं पे। ओके बाय।